Hello, intermediate students. I hope you guys are doing great. And I also hope all your papers till today have gone really well. Now, how to prepare auditing paper for last 1.5 days. Let's do one thing. थोड़ा एक आपको ओवरव्यू देता हूं मैं that normally our weightage का bifurcation कैसे रहता है. You all know really well your chapter 1 to 8 excluding chapter number 6 that is audit in an automated environment and including chapter number 11 that is audit reporting. मतलब मोटा मोटी overall 8 chapters except chapter 6 your auditing standards chapter has a weightage of almost 60 marks. Then you have chapter number 9, 10 that is your company audit chapter and audit of items of financial statements has an approximate weightage of 15 to 20 marks. And then in the end you have two last chapters that is bank audit and your chapter of different chapter on audit of different types of entities that is chapter number 13. इन दोनों का weightage भी एक approximately 15 to 20 marks है. तो when you are approaching your exam day, that is 1.5 day before the exams, you should start with auditing standards. Start with your chapter 1 to 8. Do one thing. अपना जो क्लास का मॉड्यूल नंबर 2 है, in module number 2 if you remember we have chapter number 1 to 13 directly. Yes, in let's say in chapter 2 I've given a reference of 2 auditing standards. In chapter 3 I've given reference of 5 or 6 auditing standards. So do one thing. Keep the essay module aside. Start with module 2 directly. Chapter 1 you go. टेक अप मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स विच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू. उसके बाद में 2-3 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रहेगा जैसे ऐसे 200 रहेगा, 210 रहेगा, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रहेगा, वो वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहिए. जहां जहां ऐसे का रेफरेंस आता है गो टू योर क्लास नोट्स, go to your essay module. Otherwise your entire preparation should be from module 2 onwards. And slowly I think your after advanced accounts today your target should be to finish chapter 1, chapter 2 and chapter 3. That will cover your audit planning standards, your audit evidence वाला standards, documentation वाला standards हो गया, 200 210 हो जाएगा. ये 3 चैप्टर आपने आज खत्म करना चाहिए. Tomorrow morning get up, start fresh, start with chapter number 5, 7 and 8. तीनों इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं 240, 520 एंड 530. उन तीनों को अच्छे से फोकस करना चाहिए. एंड देन प्रॉब्ली स्पेंड 1.5 आवर ऑन चैप्टर नंबर 6. एंड जब तुम अब प्रिपरेशन कर रहे हो 1.5 डे बिफोर द एग्जामिनेशन, लेट्स से यू फोकस ऑन ऐसे 240. डोंट थिंक अबाउट दिस मुझे 240 के बारे में कितना आता है. थिंक लाइक दिस इन 240 व्हाट ऑल स्पेसिफिक एग्जाम क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. लेट्स से टाइप्स ऑफ फ्रॉड पे क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, या एक लेट्स से फ्रॉड डिटेक्शन होता है उस केस में एज अ ऑडिटर हाउ विल यू डील विद दैट सिचुएशन, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है. थिंक फ्रॉम क्वेश्चन आंसर पर्सपेक्टिव एंड देन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर. दैट विल एक्चुअली हेल्प you to score really well and think logically and rationally in the paper. And I think by tomorrow lunchtime you should be able to finish all chapter 1 to 8 except chapter number 4. Chapter 4 को साइड में रख दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. After lunch jump on to chapter number 9 and 10 that is your company audit and audit of items of financial statements. थोड़ा लेंथी चैप्टर है, टाइम लगेगा, but objective should be till 5 or 6 PM you should be able to be thoroughly doing these 2 chapters. इन चैप्टर्स में थोड़ा और केयरफुल रहना, स्पेसिफिक सबसेक्शंस वगैरह को डिटेल में पढ़ना आराम से, इंपॉर्टेंट असर्शंस के डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से देखना. कुछ जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जहां पर बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको जो लिस्ट बना करके दिया, आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ विथ यू. इस वीडियो के नीचे लिंक के अंदर आपको एक पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा. इस पीडीएफ के अंदर मैंने चैप्टर बाय चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको फोकस करने चाहिए उसका लिस्ट बना के दिया है. आई थिंक आफ्टर लंच आफ्टर योर डिनर टाइम टुमारो you should go to the remaining chapters. Try to focus let's say on chapter number your 12, 13. बैंक ऑडिट हो गया, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज हो गया, वहां पे तुमने फोकस करना चाहिए. ऑन द डे ऑफ एग्जाम व्हेन यू गेट अप डू सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. सी चैप्टर 4 बहुत वास्ट है. तुमने EIS के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे 315 तुमने क्लास नोट से रिवाइज कर ही लिया होगा. तो अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम डिवोट करना एंड आई एम श्योर यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ टू गो फॉर द एग्जामिनेशन. 2-3 important things. Don't try that I have to finish everything or every page of all my 3 modules. बहुत difficult होने वाला है. Second thing, a mistake which lot of people do, क्या मैं directly question answer module refer कर लूँ? See, that may help you to pass, but I'm telling you there is no guarantee. The best and the short way is cover your module 2 एंड ऑब्वियसली मॉड्यूल 2 में जहां जहां ऐसे का रेफरेंस आया मॉड्यूल 1 पे जाना चाहिए एंड कुछ क्वेश्चंस ऑफ Q&A मॉड्यूल देखना चाहिए. सिर्फ Q&A मॉड्यूल करना डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं होगा. डोंट ट्राई टू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स लेट्स से तुमने कुछ 1-2 टॉपिक छोड़ दिया था अभी तक तुमने नहीं पढ़ा है, उसको जबरदस्ती देखने का ट्राई मत करना. आइडियली यस डोंट लीव एन एंटायर चैप्टर बट डोंट ट्राई टू लीव 1 or 2 टॉपिक्स, मतलब उसके पीछे इतना नहीं पड़ जाने का दैट यू एंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम देयर. अगर उस चीज को ध्यान रखोगे आई एम श्योर यू विल बी फाइन. I hope all of you will prepare really well. All the very best to you all.
If you guys have any doubts and all, you can just drop me a message. You all know me where to reach out. Thank you guys. Good luck. Bye-bye. See you.